गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। और बाकी लोग कहाँ गए? सर एक्चुअली प्रवीण नहीं आएगा क्योंकि उसके वो अटेंड नहीं करेगा क्लास। एंड देन हमारा सर कोमल कोमल एंड अजीत का सर टी एक वो चल रहा था, वो आज थोड़ा लॉन्ग हो गया था तो इसलिए बस लेट हो गया। अच्छा अच्छा। तो अभी दो ही लोग हैं और लोग नहीं आएंगे इस वजह से ना? अजीत अजीत भी ज्वाइन कर रहा है, 2 मिनट में ज्वाइन कर ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो कैलकुलेशन किया था तुम लोगों ने जो मैंने दिया था? फील्ड विद 8 एलिमेंट। यस। हाँ, तो क्या हुआ, कुछ कैलकुलेशन किया, कुछ बना?
Okay, so maybe I should start actually, right? So I'll call Ajit once. Okay. हेलो। बर्थडे केक तो मैं लाया नहीं था, बर्थडे केक। Sir, Ajit has joined. Yes, so I think I've started sharing. 1 minute. Can you see the screen? Yes, sir. हाँ बोलो बोलो। सर सॉरी लेट हो गया सर, आज थोड़ा हिस्ट्री है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो मैं शुरू करता हूँ। ओके। तो पिछली बार हमने क्या किया था, मैं जस्ट रिकॉल करता हूँ। So last time I have shown you, we have taken the polynomial x square plus x plus 1 is equal to 0 over z2, right? And we called alpha is the root of this equation, so alpha square plus alpha plus 1 is equal to 0. And then we constructed gf4 as a plus alpha b such that a and b are in z2. Okay, so and where alpha square plus alpha plus 1 is equal to 0. And you saw that we constructed a field with 4 number of elements.
So today I will again go for it, and for 8 number of elements, how do we construct the field? So we have ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0, where a is not equal to 0. And so from this, we are going to get two polynomials which has no root. I'm not showing you the steps, but writing the polynomials directly. One of them is x cube plus x plus 1 is equal to 0. Another one is x cube plus x square plus 1 is equal to 0. Now the question is, which equation should we take? Both has degree 3 here, you see, degree 3, degree 3. So when you use these two equations, we are going to get a field with 8 number of elements. So I would say that some of you may take alpha as the root of this equation, that means alpha cube plus alpha plus 1 is equal to 0. And some of may take this equation, that means alpha cube plus alpha square plus 1 is equal to 0. Okay. Now when you take this equation, we, we can construct GF8 as A plus alpha B plus alpha square C, such that A, B, C belongs to Z2, right? Now, when you do the calculations, so have you done this calculation? Any of you have done this calculation? Yes, sir. Yes, So sir. कौन सा इक्वेशन लिया था और क्या मिला? सर ये इक्वेशन अल्फा क्यूब प्लस अल्फा प्लस 1, इसमें सर सारी पॉसिबिलिटीज ए बी सी की वैल्यूज को 1 0 0 एंड देन 0 1 0 इस टाइप से रख के वैल्यूज मिलती हैं हमें। सर लास्ट का जो सेट मिला वो 8 वैल्यूज, वो पता नहीं है हाँ, तो क्या है वो बताओ। सर। वो है 1, तो मैं पहले 0 लिखता हूँ, 0 तो होगा, व्हेन ए बी सी इज इक्वल टू 0, 1 होगा, अल्फा होगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर, हाँ, अल्फा प्लस 1। अल्फा क्यूब होगा, सर अल्फा क्यूब चेंज होके 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। हाँ मतलब अल्फा क्यूब हम सब पावर्स ऑफ अल्फा में लिख सकते हैं। अल्फा की ओके पावर ओके, अल्फा 4 अल्फा होगा, स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 5 होगा, अल्फा की पावर 6 होगा, इतने ही होंगे। That's what you got? यस सर। Where alpha सर cube plus alpha plus 1 is equal to 0. Yes, पूछो। यस सर, यस सर। Yeah, what question you want to ask? Yeah. सर एक्चुअली सर अल्फा क्यूब को हमने चेंज कर दिया था, 1 प्लस अल्फा लिख दिया था एंड देन अल्फा 4 को चेंज कर दिया था। Fine. So you might have got the binary representation, right? जैसे हमने field with Yes, 4 number of elements में binary vector of length 2 मिला था for each yes, power of alpha. यहाँ पे हमको binary vector of length 3 मिलेगा, right? yes. Right, good. So then we can do all the calculations and then you can make the tables, right? टेबल बनाया था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। हाँ कोमल, टेबल बनाया था। यस सर, वो सर वो जो ऑपरेशन वाला टेबल नहीं बनाया था सर, एक्चुअली वो सेम टेबल बनाया था जो वेक्टर्स की फॉर्म में 1 0 0 0 1 0 इस टाइप से। नहीं वो तो खैर डायरेक्ट है, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। हाँ, वो नहीं किया। so anyway, so now I again give it to you, so now you know what to do. ये actually now you can see that जैसे अल्फा क्यूब यहाँ पे अल्फा, so now actually I can show you from here alpha cube is equal to alpha plus 1, alpha की पावर 4 is equal to alpha square plus alpha, alpha की पावर 5 is equal to alpha cube plus alpha, which is same thing as alpha,
सॉरी अल्फा स्क्वायर होगा, राइट, विच इज अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, राइट. So alpha raised to power 6 is alpha square plus alpha cube, which is alpha plus 1. So that means alpha square plus 1. ठीक है. तो भी सारे आ गए इसमें. करेक्ट. सो वी हैव गॉट ऑल. अगर आप अल्फा रेस्ट पर 7 लेते हो क्या होगा? फिर से पावर अल्फा से हो जाएगा, तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा बराबर अल्फा क्यूब क्या है? अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा बराबर 1. So alpha raised to 7 is equal to 1. Back to this case. तो ये तो हो गया जब हमने अल्फा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 लिया. सो द माय क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इफ आई टेक द अदर पॉलिनोमियल. क्या तुमने दूसरा वाला पॉलिनोमियल ट्राई किया किसी ने? मैंने नहीं किया. अच्छा. तो एनी आइडिया, एनी फीलिंग व्हाट विल हैपन व्हेन यू टेक द अदर पॉलिनोमियल? तो यहाँ पे भी एक्चुअली क्या होगा? एलिमेंट्स विल बी 0 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा raised to power 4, alpha raised to power 5 and alpha raised to power 6, such that alpha cube plus alpha square plus 1 is equal to 0. Now what happens? From this I can compute what is the value of, say, alpha. So alpha cube is equal to alpha square plus 1, correct? Alpha raised to power 4 is equal to alpha cube plus alpha, which is alpha square plus alpha plus 1. यहाँ पे देखो अल्फा क्यूब की वैल्यू थी अल्फा प्लस 1, यहाँ पे अल्फा क्यूब की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस 1. यहाँ पे अल्फा की पावर 4 की वैल्यू थी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, यहाँ पे वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1, राइट. नाउ वी राइट इट डाउन. व्हाट हैपेंस टू अल्फा रेज्ड टू पावर 5? अल्फा रेज्ड टू पावर 5 क्या होगा? अल्फा क्यूब. सो अल्फा क्यूब इज अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, पहला वाला टर्म, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा. सो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस अल्फा, ठीक है. अल्फा रेज्ड टू पावर 6 क्या होगा? अल्फा रेज्ड टू पावर 6 क्या होगा? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है. एंड अल्फा रेज्ड टू पावर 7 क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1. अब आपने सब देख लिया. अब मेरे को बताओ दोनों में क्या कनेक्शन है? दोनों दोनों वैल्यूज आप देख रहे हो ना? क्या पता लग रहा है आपको? बताओ, कौन बताएगा? आशीष, अजीत, कोमल, तीनों में से कोई भी बताओ. व्हाट इज हैपनिंग? क्या हुआ? कैन यू हियर मी? हाँ अजीत बताओ. What is the connection between the two? क्या हुआ? Any doubt? अरे तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो. हम्म.
Can you hear me? Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. There was some problem in the connection. Okay. So my question is, what is the connection between the two? मेरे को कोई उत्तर बताओ. You have seen both the values now. Hello. सर बस देखना है. Okay. ठीक है. दोनों के एलिमेंट्स तो सेम ही लग रहे हैं. हाँ. Good observation. So that means क्या हुआ कि basically क्या है कि elements का order अलग है. पहले कोई आ रहा है, फिर कोई आ रहा है, फिर कोई आ रहा है, right? Yes, sir. Correct. जैसे अल्फा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन है पहले सिस्टम में, और दूसरे सिस्टम में अल्फा रेज पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन है, राइट? Yes, sir. सो दैट मीन्स पहले वाले सिस्टम से हम दूसरा वाला सिस्टम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय चेंजिंग सम अल्फा यहाँ पे टू सम पावर ऑफ अल्फा, एंड वी विल चेंज एवरीथिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम. ओके. So basically, mathematically, we say that both the fields are isomorphic to each other. Whatever we are getting, it's just renaming of the of the elements. So that means if I want to construct a field with 8 number of elements, it does not matter which polynomial should I take. Should I take x cube plus x plus 1 is equal to 0, or x cube plus x square plus 1 is equal to 0? Doesn't matter. I can pick up any one and I can work around the system, right? तो अभी मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, सो आई लीव इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू. बोथ द केसेस में आप टेबल बना के चेक कर सकते हो कि एडिशन की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स है और क्लोज्ड है सेट, और सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. So this is a field with 8 number of elements. Got it? Any question? No, sir. Okay, fine. So let me go ahead with further. So now, one thing that you observe that alpha raised power 7 is equal to 1. This is common to both actually, right? So that is power of alpha will, so when we are raising powers of alpha, so alpha raised power 6 के बाद 7 power will give you 1. So now, in other words, so I have constructed GF2 cube, which is 8, right? And that I have constructed using GF2 field with 2 number of elements, which is Z2. हमने यहाँ पे एक डिग्री 3 पॉलिनोमियल लिया, से एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और उससे इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है. नाउ एक्चुअली आई कैन आल्सो डू इट फ्रॉम अनदर वे, व्हिच इज GF2 क्यूब इज इक्वल टू 8 को आई कैन आल्सो कंस्ट्रक्ट फ्रॉम GF2 स्क्वायर, व्हिच इज 4, और यहाँ पे हमको डिग्री 2 पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा, which has no root in GF4. There is another way of constructing this. Okay, from here to here. Okay, but so in general, so basically what we can do is the following. We have GF2, which is our Z2. इससे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं GF4, which is GF2 स्क्वायर. इससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं GF2 क्यूब, which is 8. इससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं GF2 raised to power 4, 16, dot 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 GF2 raised to power m. Okay, so this is known as tower of binary fields.
Now, why this tower is important? So actually, all packets of internet that we see around, data packets, they are elements of these fields only, nothing but elements of these fields. Okay. Now, whatever we have done for binary case, we can also do it for, query case. So suppose we take GFP as ZP, where P is a prime number. Okay, from GFP we can construct GFP square. From GFP square we can construct GFP cube. Dot 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 dot. We can construct GF e raised to power m. Okay. So in general, this is, we call it as GFQ. So there exists a field with Q number of elements if and only if Q is a prime power. Okay, so this is the basic way of constructing finite fields. So next case will be GF9, which I would again invite you to construct GF9. 9 means GF3 square. Okay, so उसके लिए हमको देखना पड़ेगा GF3, that means Z3. Z3 पे we should take degree 2 polynomial, call it say fx 0 over Z3, which has no root. Right, over Z3. So I leave this as an exercise for you to construct field with 9 number of elements. Any idea about the polynomial? Hello. Yes, sir. Yeah. So any idea about the polynomial? Which polynomial will work here? X cube plus X plus 1. X square plus 1. X square plus 1. If we take x square plus 1. So 0 नहीं है root, 1 नहीं है root, 2 2 to the 4 plus 1 5 modulo 3 नहीं है root. Yeah, so this will work. So will you be able to construct the field with 9 number of elements? It's a very nice thing. Just construct as powers of alpha. Okay, so in general I can mention that we denote field with q number of elements by fq or gfq or gf p raised to power m, consisting of elements 0 1 alpha, alpha square, alpha cube. ये पावर ऑफ अल्फा कहाँ तक जाएगा? एनी आइडिया? अभी हमने देखा है कंस्ट्रक्शन में. कहाँ तक जाएगा पावर ऑफ अल्फा? Now I'll just go back and see GF8 के केस में ये एक कम था, अल्फा रेस पर 7 तक गया था. Now if you remember GF4 के केस में 4 minus 1 3 तक गया था ना, अल्फा क्यूब was 1, right? If you remember क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था वो अल्फा, वहां पे. यहाँ पे 7th रूट ऑफ यूनिटी है, तो अल्फा रेस पर 7 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे क्या होगा? p रेस पर m माइनस 1 तक जाएगा, राइट?
This will work, because what I am saying that this will be the case, right? Do you agree or not? See, remember GF4 के केस में क्या था, which is 2 square, right? तो 2 square minus 1, which is 3. So we remember alpha cube was 1 here. और GF8 के केस में क्या था, 2 cube. So 2 cube minus 1, which is 7. So alpha raised to 7 was 1. Got it? So ये कितनी हो गई? I think यहाँ पे पावर 1 हो गई, 1 2 3 p raised for m minus 2 एलिमेंट्स हैं, फिर एक 1 हो गया और एक वो हो गया, तो टोटल p raised for m एलिमेंट्स हो गए. So we can clearly say that cardinality of fq is p raised for m, right? Where what is alpha? Where f of alpha is equal to 0, where fx is irreducible polynomial of डिग्री, कितना होगा इसका डिग्री? m, right, over zp. Got it? Any question? मेरी आवाज आ रही कि नहीं पता नहीं मेरे को. Yes, sir, you're audible. सर आ रही है. आ रही है ना? पता नहीं बीच में कनेक्टिविटी का इशू. तो अभी नाउ एनी क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर? या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी. तुम लोग बोल नहीं रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. सर अभी समझ नहीं आ रहा है, पढ़ना समझ नहीं आ पड़ेगा रहा है? दोबारा से बैठकर, फिर थोड़ा दोबारा हो जाएगा. अरे तो मतलब क्या चीज समझ में नहीं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ. सो आई एम हियर जस्ट टू आंसर योर क्वेरीज ओनली ना, सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू, आस्क मी. हमने क्या किया, फील्ड विद q नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिर q इज द पावर ऑफ प्राइम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने देखो देखो यहाँ पे क्या किया, gf8 के केस में क्या किया, फील्ड को हमने पावर्स ऑफ अल्फा के, जो भी हमने ऐसे इस तरह से सिस्टम बना रहे थे, राइट? सो व्हाट जी आई एम सर. सेइंग, दिस इज नथिंग बट पावर्स ऑफ अल्फा में आ रहा है, राइट? यस सर. राइट, यहाँ पे ही पावर्स ऑफ अल्फा में आ रहा है, नो मैटर विच काइंड ऑफ पॉलिनोमियल आई टेक. और GF4 के केस में ही पावर ऑफ अल्फा में आ रहा था. तो इन जनरल हमने उसको लिख दिया है कि ऐसा होगा पावर्स ऑफ अल्फा में 0 1 अल्फा रेज़ पावर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा रेज़ पावर pm minus 2, where यस सर. alpha is the root of a irreducible polynomial which has no root in the ground field. So in case of GF4 the polynomial was x cube plus x plus 1 is equal to 0, which has no root in the ground field, right? Similarly, in case of GF8 polynomial was x cube plus x plus 1 is equal to 0, or x cube plus x square plus 1 is equal to 0. You can take any polynomial and it is going to work, okay? In case of GF8 यहाँ पे. So in other words, if I have to construct a field with p raised for m elements, I need to take a degree m polynomial which has no root in the ground field, right? Irreducible, okay? And from that I take alpha as a root, and then I can form the set as 0 1 alpha alpha square alpha cube and so on. So we can also write down this as, you can also write it down as a0 plus a1 alpha plus a2 alpha square. अब अगर तुमको समझ में आ रहा है तो मेरे को बताओ ये कहाँ तक जाएगा, बताओ कहाँ तक जाएगा ये? p-1. ये p-1 पे तक नहीं जाएगा, ये m-1 तक जाएगा. am-1 तक जाएगा ना. सी क्या है, हर एक ai की वैल्यूज हैं जीपी में,
0 से लेके p माइनस 1 तक कुछ भी वैल्यूज है, p वैल्यूज है, तो p इंटू p m टाइम्स होना चाहिए ना। अल्फा की पावर कितनी आएगी? m minus 1. This is same thing as what I am saying, that 0 1 alpha square alpha raised to power p raised to power m minus 2. दोनों सेम है, ये पावर में है अल्फा के रिप्रेजेंटेशन और ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। तो हमने देखा है जैसे GF8 के केस में क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में पावर्स ऑफ अल्फा में रिप्रेजेंटेशन और राइट हैंड साइड में पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा प्लस 1 लाइक दैट, राइट? समझ रहे हो ना? बोथ आर द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सेम थिंग. So with AI's varying over ZP, this is nothing but in general as a binary, not as a binary, as a PRE vector of certain length. I mean length m actually. Okay. Any question at this point? First of all, I would like to ask you. अभी समझ नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से शायद. हाँ सर, समझ आ रहा है सर. समझ आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा जितना होगा सर. जबरदस्ती से नहीं बोल. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं. अच्छा नहीं तो एक काम करो ना. सो मेरे ख्याल से आई थिंक राइट अवे GF9 का एक बार बनाओ जरा मेरे सामने, देखो क्या हो रहा है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. GF9 की टेबल बनाओ, GF9 के एलिमेंट्स देखो और मेरे को बताओ हाउ डू यू फील. GF9 का आई थिंक आई हैव रिटन हियर ना. GF9 के लिए तुमने खुद ही बताया पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 1 है. कैन यू स्टार्ट मेकिंग द पावर्स. तो GF9 के केस में क्या होगा? GF9 के केस में ये हो जाएगा GF3 स्क्वायर, m की वैल्यू 2 हो गई, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट a plus alpha b such that a and b are in Z3, right? And alpha square plus 1 is equal to 0 over Z3. Alpha is the root of this equation, correct? Do you agree? इसको बनाने का सबसे अच्छा आसान तरीका यही है. What we do, मैं क्या करता हूँ, 0 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा raised to power 4 alpha raised to power 5 alpha raised to power 6, and I think it should be alpha raised to power 7, right? ये होगा. So the question is whether this polynomial will work or not. ये तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा. I think that is something important thing. Will this alpha square plus 1 is going to work or not? So one very interesting problem is in number 3, what is known as, how do we factor a polynomial something like this? How do we factor x raised to power n minus 1?
Okay, how do we factor this polynomial? For what n can we factor this? Okay. I think later on I will try to give you some examples over, peri-GP also. You can do these calculations, some of them. Peri-GP can also be used to do the calculations, Anyway, so that's why I said it is really interesting. ये polynomial काम करेगा कि नहीं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा when you start doing the calculations. Okay. हो सकता है काम करे, हो सकता ना करे. I'm not telling you right now whether it will work or not. Actually, यहाँ से you should remember that alpha square is equal to minus. So basically, alpha square is equal to minus 1. Modulo 3 is nothing but 2. Then alpha cube is equal to 2 alpha. Alpha raised to power 4 is equal to 2 alpha square. Then alpha raised to power 5 is equal to, but now 2 alpha square is nothing but 2. Will it be 4? ये थोड़ा सा doubtful है actually. It is working or not. Got it? Can you see the issue here? Hello? सर Can you see the issue here? अजीत बोल रहा है ना? हाँ. Do you see a issue here when we take this polynomial like alpha square plus 1 is equal to 0? Yes, sir. There exists a solution for this. Yes. Good. So now you observe this. So basically हमको ऐसी इक्वेशन लेनी है जो हमारे लिए काम करे, right? Yes, sir. जिसको हम फैक्टर ना कर पाए. हाँ, जिसको हम Z3 पे फैक्टर ना कर पाए, and then everything will be perfectly fine. Okay. ठीक है ना? So I think I leave as an exercise for you. थोड़ा सा actually I want you to play with it, and then you really understand when you do it by yourself. खुद से करके देखने में ज्यादा मजा आता है ना. You will actually see what is going on here, right? So I think as an exercise, you first try to do field with 8 number of elements की tables बनानी है, addition subtraction की, sorry addition और multiplication की, 9 का पूरा construction करना है और table बनानी है. Then I think you will have some understanding. आगे चल करके हम ये सब कर क्यों रहे हैं by the way? तुम लोग तो कुछ पूछते ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं ये सब हम? Because we have to generate finite number of field with finite number of elements. हाँ, but finite number of field with finite number of elements हमको क्यों चाहिए? बताओ. Because actually जो इंटरनेट का तुम्हारा पैकेट है, that is nothing but element of this field only, finite field. ठीक है, जो भी तुम्हारा पैकेट होता है, पैकेट की जो प्रोसेसिंग होती है, इट्स वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग एक्चुअली, सो कंप्यूटर अर्थमेटिक में finite fields plays a very important key role. Okay, so you will see that. हाँ. Sir, repeat this. Sir, please repeat. So what I'm saying that कि जो प्रोसेसिंग होती है पैकेट्स की, it is done over finite fields only. डेटा पैकेट्स जो होते हैं, so each data packet, for example, you might have heard bytes. Bytes सुना है ना तुमने? Yes, sir. Kilobyte, megabyte. What do you mean by byte? Byte का क्या मतलब होता है? 8 bits, correct. Now 8 bits means what? How many elements will be there? 8 bits के कितने elements possible होंगे? 2 power 8. Yes, that is 256. Yes, sir. Correct. तो 256 के जो ASCII characters हैं, because they are matched to the finite field with 256 elements. So GF 2 raised power 8 की जो field है वो आप construct कर सकते हो, right? And as you know that
each element, whether you can write it as a power of alpha, or you write it as a polynomial of alpha, or you write it as a binary vectors of length 8. हमने कल करके दिखाया था ना पिछली क्लास में कि we can add, we can multiply, we can subtract, we can take square root of these elements, these packets. Okay, so this is really very fundamental thing. Okay. Okay, so I think yeah, so this is now actually you will see that many problems that we are handling on computers will lead to, in fact, any engineering problem leads to system of equations. Okay, and system of equations which are solving over this finite field. For example, suppose you take cloud computing. Cloud computing में क्या होता है basically? Any idea? क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना है? यस सर, Yes, सर sir. बेसिकली क्या होता है कि Concept. मतलब हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, पहले अजीत बोलो फिर दूसरा जना बोलेगा। हाँ जी हाँ सर बेसिकली वही होता है कि मतलब आजकल क्या हार्ड डिस्क वगैरह में काफ़ी स्पेसेस का मतलब कम पड़ जा रहा है, इसलिए हम लोग ने क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वेंट कर दी। हम्म, और सर क्लाउड कंप्यूटिंग के कम से कम 4-5 प्रकार के होते हैं, मतलब सिंक्रोनस कंप्यूटिंग ऐसा कुछ मतलब ढंग से याद नहीं है, हम्म। ऐसे ही बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है। नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। बहुत बेसिक चीज मैं बताता हूँ। बेसिकली इन जनरल अगर मैथमेटिकली हम देखें, व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड इज नथिंग बट ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑफ नोड्स। ठीक है ना? मतलब हमारा जो डेटा है, सो बेसिकली क्या है कि rather than depending on one server, we are depending on n servers. Okay, and each server has certain portion of our data. For example, जैसे गूगल फाइल सिस्टम है, सो आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट इट। गूगल फाइल सिस्टम में जीमेल में हमारा जो फाइल पैकेट है वो कितने टाइम्स रेप्लिकेट होता है? They try to replicate it 35 number of times. Earlier, of course, I am not sure what is the current standard now, but earlier they used to replicate 35 number of times when it was launched actually, so that it provides you 99.9% reliability. तो होता क्या है कि बेसिकली ये ये जो पैकेट्स हैं जो कि इस फाइनाइट फील्ड के ऊपर हैं, इनको हम क्या करते हैं? सो बेसिकली यू टेक अवर फाइल, मान लिया पीडीएफ ले लिया, डॉक फाइल ले लिया, कोई भी ले लिया, इसको हम डिकम्पोज करते हैं एसकी कैरेक्टर्स में, राइट? एसकी कैरेक्टर मींस वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द फील्ड विद 2 raised power 8 एलिमेंट्स, और उनके चंक्स लेते हैं। ठीक है ना? तो हम डेटा चंक्स लेते हैं। अब इन डेटा पैकेट्स को हम स्टोर करते हैं रेप्लिकेट करके। तो इन द करंट सिस्टम वी रेप्लिकेट ए लॉट ऑफ देम। तो जैसे एक मास्टर सर्वर होता है नोट्स में, और क्लाउड में डिफरेंट डिफरेंट नोट्स होते हैं। मास्टर सर्वर को मालूम है इस फाइल का कौन सा पैकेट किस सर्वर पे है पड़ा हुआ है। ये हो सकता है ये सर्वर, एक सर्वर हमारा होनोलुलु में हो, और एक सर्वर कनाडा में हो, एक सर्वर इंडिया में हो, एक कोई अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में हो सकते हैं। ठीक है ना? बट दे आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। सो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूजर वांट टू एक्सेस द फाइल, it connects to different servers, and वहां से डेटा रिकंस्ट्रक्ट होता है। सो नॉर्मली व्हाट दे डू, अभी इन द करंट सिनारियो 2007 से व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, you take your file, decompose into chunks, replicate the chunks in certain manner, and throw them on the cloud in such a fashion so that whenever you want to reconstruct the file, you contact any k set of nodes out of n nodes. n nodes में हमारी डेटा फाइल पड़ी हुई है, हम कोई भी k nodes को कांटेक्ट करेंगे and we will reconstruct the file. So that means we are playing with this arithmetic of finite fields only. No, we are just contacting the data, we are taking linear combination of the data packets, and we are reconstructing the file. Okay, that is how you do. Also, in terms of providing the reliability, if a node is down, ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, एक नोड तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो देन व्हाट हैपेंस है, दूसरा हेल्पर नोड आ जाता है उसकी जगह पे, और वो क्या करता है, वो रिकंस्ट्रक्ट करता है, मतलब रिपेयर करता है उस नोड को। तो दो तरीके से रिपेयरिंग होती है, या तो उस नोड पे जो डेटा था एग्जैक्ट लॉस, उसको रिपेयर करता है, उसको उसकी जगह पे एग्जैक्टली वही डेटा रिपेयर करने की कोशिश करता है, और उसको फंक्शनल डेटा से रिपेयर कर देते हैं। मतलब वहां पे मान लो
पैकेट नंबर 5, पैकेट नंबर 10, पैकेट नंबर 11 था, आपकी जगह उस वहां पे पैकेट नंबर 7 हो गया, पैकेट नंबर 9 हो गया, पैकेट नंबर 11 हो गया, कोई अलग पैकेट नंबर हो गए, ठीक है ना, दूसरे पैकेट्स आ गए, सच दैट ये जो प्रॉपर्टी थी फाइल रिकंस्ट्रक्शन की, कॉन्टेक्टिंग के नोट्स इन द क्लाउड टू रिकंस्ट्रक्ट द फाइल रिमेन्स द सेम. ओके ओके, सो दिस इज द थिंग, द फंक्शनल रिपेयर एंड एग्जैक्ट रिपेयर की मैकेनिज्म होती है हमारे क्लाउड सिस्टम में. So these things are known as regenerating codes, where they use the regenerating codes. So basically now they replicate. So mostly cloud servers में they replicate the data in a smart fashion. क्योंकि अगर एक ही सर्वर पे बहुत सारा रेप्लिकेशन करेंगे तो भी प्रॉब्लम है. So now this is a multi-dimensional optimization problem where what we want to do on each node we want to minimize the number of packets stored. Also, in case of repair mechanism, we want to use less bandwidth. We don't want to use a lot of bandwidth for the repair. So it's it's a multi-dimensional. Also, it should be scalable. आज हमारे पास आज हमारे पास 100 नोट्स हैं और कल को जो है ना हमारे पास 50 नोट्स और आ गए. सिस्टम शुड वर्क स्मूथली. ओके, सो दिस इज अ रियल चैलेंज. ओके ओके, सो आई थिंक क्या वो अजीत कहीं चला गया क्या? Sir, he must be disconnected. ओ अच्छा अच्छा, फाइन. Actually, the network is weak today. ओके, अच्छा, आपके यू आर एक्सेस यू नॉर्मली यू एक्सेस इट फ्रॉम होम और फ्रॉम द ऑफिस? Sir, we are in campus right now, so the LAN is not working correctly at full efficiency today. Okay, fine. Okay, so I think this is the basic thing. So I think now before proceeding further, I would I think you should do this exercise before we should do it. So maybe in the next class, once you do it, then we can play with a couple of more things. Here. So I think stop at this point. So in the next class, अच्छा वो assignment करने की कोशिश करी है आप लोगों ने? अभी नहीं. वो जो हमने ऑर्डर एंड लॉग इन की एल्गोरिथम दी थी वो पेपर पढ़ने की कोशिश करी? No sir, अभी मैंने नहीं पढ़ा है. सर कोशिश चल रही है सर. ओके, वो तो ग्रुप में चल रही होगी ना कोशिश? जी सर, जी सर. हाँ हाँ, ठीक है. तो आई थिंक पढ़ने की कोशिश करो. एंड ये एक्सरसाइज में जो देता जा रहा हूँ ना, इसको अगर तुम छोड़ोगे तो फिर आगे बात पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए कर लो इसको, ठीक है ना? तो मैंने दिया है. हाँ सर, कोई तरीका होता है क्या रिसर्च पेपर पढ़ने को? सर 15-20 पेज का होता है, मतलब अगर एक एक करके याद हो तो काफी टाइम लग जा रहा है इसमें. नहीं, देखो, पेपर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है पहली बार पूरा पेपर बैठ के. मैं तुमको बताऊं, बेस्ट तरीका है सुबह सुबह अपना स्नान ध्यान करके आराम से नाश्ता करके, ठीक है ना, एक कंफर्टेबल चेयर ले लो, ठीक है, और चाय वाय का कप ले लो या कॉफी ले लो, एंड देन स्टार्ट रीडिंग इट. तो मतलब मेरा कहने का मतलब फ्रेश मूड से कम 1-2 घंटे पहले पेपर को पढ़ने की कोशिश करो. और पहली बार में हो सकता है तुमको पूरा पेपर बिल्कुल भी समझ में ना आए, हो सकता है 5% आए, 10% आए, दैट इज ओके, ठीक है ना? देन यू टेक ए गैप, फिर अगेन दोबारा पढ़ो. मैं आई एम टेलिंग यू हाउ टू रीड ए पेपर. क्यों क्या होता है, कोई ऐसा बोलता है कि पहली बार में सारा पेपर समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता, बिकॉज समबडी माइट हैव लॉट मोर टेक्निकल डिटेल्स, ठीक है ना? तो दोबारा फिर से पढ़ो उसको, तिबारा पढ़ो. सो व्हेन यू रिपीटेडली रीड इट, तो धीरे धीरे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी. So normally it takes 1 week to 2 weeks when you understand 40-50% of the paper. That is enough if you can understand 50% of the paper. Okay, ठीक है ना? So slowly read करो उसको. और लेकिन अगर पढ़ोगे नहीं और लास्ट मिनट पे छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत होगी. ठीक है So ना? I think what the problem that we are facing is that we are using our screens to read the paper rather than having a printout for that. तो प्रिंट तो ऑफिस में नहीं मिलता उधर. जी सर, वो करवा कर ही पढ़ा जाएगा एफिशिएंटली. मैं वही तो बोला ना, नाश्ता वाश्ता करके अपना, अभी आजकल धूप बढ़िया निकली हुई है, बैठ गए अपना चाय का कप लेकर के और जी कहीं गार्डन में पेड़ के नीचे एंड रीड इट, कहाँ जाना है? तो कंसंट्रेशन से पढ़ोगे हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है ना? लेकिन पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी. मैं एक्चुअली चाह रहा था, अगर तुम लोग फ्रैंकली स्पीकिंग अगर तुमको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है तो इसी को हम आगे
नंबर थ्योरी में, ये कंप्यूटेशनल नंबर थ्योरी में मैंने तुमको बताया से अगली ब्रांच है कंप्यूटेशनल नंबर थ्योरी की, सॉरी क्वांटम कंप्यूटेशनल नंबर थ्योरी। तो अगर तुम इसी पेपर को आगे पढ़ते हो तो मैं तुमको थोड़ा सा कुछ तुम्हारा फायदा हो सकता है, बिकॉज तुम अगर आगे व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज और यू वांट टू गो फॉर ए जॉब। सर मेरा जॉब है। जॉब कहाँ पे लेना है, ले लिया? नहीं सर सर नहीं सर, अभी तक तैयारी चल रही है थोड़ा, मतलब उस हिसाब तक पहुंचने के लिए कि अच्छे जॉब मिल सके। हम्म। नहीं तो जैसे आजकल क्या है ना, अच्छी कंपनीज में क्वांटम इंजीनियर्स दे आर हायरिंग एक्चुअली, सो इफ यू हैव ग्रिप ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटेशनल नंबर थ्योरी एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, तो तुम्हारा डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट में। देर आर लाइक गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, अगर तो आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे आप देखोगे बॉस, दे आर लुकिंग फॉर पीपल टू हायर एक्चुअली इन दिस एरिया। ठीक है ना? तो थोड़ा सा कुछ पेपर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और जॉब मिलने में थोड़ा आसानी होती है इफ देयर इज ए पेपर। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने एक पेपर लिखा था मेरे साथ, और उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक जब कैंपस में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई थी तो बाकियों का 7-7 8-8 राउंड का इंटरव्यू हुआ, उसका एक ही राउंड में क्लियर हो गया। नाउ ही इज डूइंग वेरी गुड कॉलकॉम में। ठीक है ना? सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि कंपनीज प्रेफर इफ यू हैव डन समथिंग नॉन ट्रिवियल इन योर CV। ठीक है? सो आई एम ट्रीटिंग यू ऑल ऑफ यू एज ए माई स्टूडेंट कि यू शुड गेट गुड जॉब एज वेल। ठीक है? तो इफ यू कैन डू समथिंग नॉन ट्रिवियल कंट्रीब्यूशन, जैसे तुम लोग 4 लोग हो, 2-2 का ग्रुप बना के कुछ करोगे तो कुछ अच्छा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है? ओके, इवन इफ वी आर फार अवे वी कैन इंटरेक्ट थ्रू इंटरनेट एंड वी कैन डू समथिंग। ठीक है? ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल। सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं with few more things. Now we will study the complexity of certain problems. Okay, so normally any engineering problem will lead to system of equations over finite fields, और उनको सॉल्व करने की जो algorithms हैं वो काफ़ी नॉन ट्रिवियल हैं। ओके, so we'll talk about those things later on. ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।